Okay. So guys, open channel flow, classification of flows में अगर अपन देखते open channel flow among the channel are classified for definition and analysis of shown in below. So ओपन चैनल फ्लो कौन से इसमें स्टडी और अनस्टडी के इसमें अभी हो रहा है. अब विच आर द स्टडी एंड विच आर द अनस्टडी. स्टडी में यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. स्टडी में ही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. स्टडी में ही, मैं फिर से बताता, स्टडी में ही यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. आपको धक्का लगेगा. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इट इज स्टडी. यस या. विच आर द ग्रेजुअली वैरिड, रैपिडली वैरिड एंड स्पार्शियली वैरिड. ओके, स्पार्शियली वैरिड फ्लो. ये आप आपके बुकलेट में लिख सकते हैं अभी के अभी. ओके, स्पार्शियली वैरिड स्टडी के लिए. ओके, दैट इज फॉर स्टडी. एंड व्हाट इज अनस्टडी. अनस्टडी इट इज डायरेक्टली जो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज नथिंग बट अनस्टडी. ग्रेजुअली वैरिड, रैपिडली वैरिड एंड स्पार्शियली वैरिड. ओके, दैट इज अनस्टडी फ्लो. अब क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज स्टडी. ओके, dy by dt is not change, then the velocity also and discharge also not change. यानी डिस्चार्ज और वेलोसिटी कहीं भी आप लोगे तो सेम रहेगा. वहां यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्टडी फ्लो. दैट इज स्टडी फ्लो. ओके, चेंजिंग वेलोसिटी पर चेंजिंग टाइम इट इज इक्वल टू 0. चेंजिंग डेप्थ इट इज इक्वल टू चेंजिंग टाइम इट इज इक्वल टू 0. चेंजिंग डिस्चार्ज पर चेंजिंग टाइम इट इज इक्वल टू 0. तो वो क्या होगा? स्टडी में होगा. वो क्या होगा? स्टडी में होगा. और अनस्टडी उसका उल्टा. उसका उल्टा क्या? चेंजिंग y पर चेंजिंग t, यानी टाइम टू टाइम y चेंज होना यानी इट्स नॉट इक्वल टू 0, चेंज होगा. वेलोसिटी इट्स नॉट इक्वल टू 0, वो भी चेंज होगी. एंड डिस्चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी चेंज होगी. Discharge is not equals to 0. Okay, discharge is not equals to 0. So discharge is not equals to 0. तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? अनस्टडी फ्लो बोल सकते. दैट इज नथिंग बट अनस्टडी फ्लो. क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. यूनिफॉर्म फ्लो, same velocity at all the sections at a given time is called uniform flow. Same velocity एक given section के लिए same है, यानी क्या हो रहा है वहां पे? यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा. वहां पे क्या हो रहा? यूनिफॉर्म फ्लो. स्टडी अनस्टडी देखा आपने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी देख रहा है अभी. However, from practical consideration, depth y be constant at all the sections. y constant है सभी पूरे sections के लिए. Just like this, ये section है तो y constant है. Okay, characteristics of uniform flow. As a depth constant all the section in uniform flow, the water surface is parallel to the channel. ये channel है, water surface parallel होगा. The HGL is also parallel to the bottom. Hydraulic gradient line is also parallel to the bottom of datum. Okay. Then total energy line is also parallel. इसके ऊपर रहेंगी total energy line. Okay. HGL के ऊपर रहेंगी total energy line. And every slope of energy friction line SE is equals to ST, it is equal, and surface, so ST, SF, SW and S0 are also same. Okay, इस तरह रहेगा classification. The next it is equals to condition of uniform flow. तो
यहाँ पे फ्रिक्शन देगा गाइस, और यहाँ पे क्या रहेगा, ड्राइविंग फोर्स रहेगा. सो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन वेलोसिटी इज लेस, ड्राइविंग फोर्स वेलोसिटी इज ग्रेटर, एंड यहाँ पे वेलोसिटी कम लेस रहेंगी बिकॉज ऑफ लॉसेस. ओके, तो if the driving force is equal to the resisting force, then the uniform flow can't exist. If the resisting force, if driving force is equal to resisting force, then the uniform flow can exist. Then the uniform flow can exist. कब होगा, जब resisting force it is equals to driving force रहेगा तब. रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स रहेगा तब. ओके, रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स रहेगा तब क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा. सो ड्राइविंग फोर्स एफ डी इट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड रिजॉल्व अमॉन्ग द ऑल चैनल बॉटम. एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा. एफ डी इट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. FD is equals to FR for uniform flow. Resistance force FR is equals to tau A. Practically, uniform flow occur in the rectangular channel. Wide rectangular channel. Which are the wide rectangular channel? Is nothing but a very huge river जिसकी depth कम है और widely है, वहां पे occur होता है uniform flow. What is non-uniform flow? We know the non-uniform flow. आप बोलेंगे सर ये क्या था? देखो गाइस, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू एफडी इट इज इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑफ द फ्लूइड. दैट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड. ओके, रिजॉल्विंग अमंग द ऑल अमंग द चैनल बॉटम, एफडी इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस 90 थीटा माइनस 90 माइनस थीटा. ये बोर्ड पे बताओ क्या, जरूरत नहीं है. हेलो, ओके, मैं समझता आपको जरूरत नहीं है, या फिर मैंने बता दिया है, बताया था कि ये कैसे करोगे आप. सी, क्या बोला है वहां पे, ड्राइविंग फोर्स. ओके, अब आपको ये तो पता रहता है एस नॉट जो भी है आपका, वो आपका एक ऐसा रहता करके. दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेट. ये आपका चैनल है एस नॉट. दैट इज द लेंथ ऑफ दैट मेंबर. and next पानी ऐसी फ्लो हो रहा अपस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, इस तरह फ्लो होगा. सो ऑब्वियसली दैट एफ डी इट इज इक्वल्स टू हियर एंड वेट इज इक्वल्स टू दैट साइड. ओके, so we know that weight is equals to that angle is 90 minus theta.
Which 90 minus theta? Plus theta. Okay, it is equals to S naught. It is equals to Q. उसको Q भी कंसिडर कर सकते हैं. Condition for uniform flow, that is W. S naught. Longitudinal slope of bed, it is equals to tan Q. It is equals to Q. Longitudinal slope, इसको मैं क्या बोलूंगा? Tan Q. It is equals to Q. What is alpha? नहीं guys, Q. Tan Q, it is equals to Q. Because of it's very small. For small slope, बहुत स्मॉल रहेगा वो. कौन सा वाला? ये वाला बहुत स्मॉल स्लोप रहेगा. दैट्स व्हाई tan थीटा इट इज इक्वल्स टू थीटा बोलते हैं अपन. उसी तरह इसको बोल सकते हैं sin q भी. इसी तरह इसको बोल सकते हैं sin q. ओके, सो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम देखते तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम देखते व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? वन मिनट गाइस, दैट इज ड्राइविंग फोर्स. ये क्या रहेगा? W cos 90 माइनस थीटा. W cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा. That is nothing but 90 minus theta is equals to W sin theta. We know that sin theta is equals to Q. We know that sin theta is equals to S naught भी बोल सकता मैं. Okay, S naught भी बोल सकता. So driving force is the component of sulfate of water. वाटर का सल्फेट है. ओके, W is parallel to the channel. Channel bottom. What is FR? Resisting force. There is a FR, resisting force. So FR, resisting force, is equals to shear resisting force, friction resisting force, frictional resisting force. That is nothing but shear stress
into area. Okay. Shear stress into area. Which are the shear stress? Shear stress is nothing but a tau. Tau. Shear stress into area of that cross section. Tau into a FR. Okay. So note that is AS लिखो guys आप. What is AS is equals to sharing, resisting, sharing, resisting, or frictional area. AS. Okay, that is nothing but a AS. Note, uniform flow occur it if a driving force is equal to resisting force. FD it is equals to FR. FD it is equals to FR. Driving force is equals to resisting force जब होगा तब. हाँ, what is FD? It is equals to FR. तो रिलेशन यहां से ही रिलेशन बनेगा. Relation for boundary stress. W. We know the W. Density of water into volume. That is nothing but a weight. Okay. Weight into Q. That Q assign theta, it is equals to S naught. It is equals to S naught. It is nothing but a S naught. Slope. Okay. And that is tau naught. Tau naught condition. Okay. Tau naught condition into AS, it is equals to what? See. पानी फ्लो हो रहा है. ये बेड है. ये आपका Q है. इट इज इक्वल्स टू S नॉट है. और ये आपका यहाँ पे FR रजिस्ट कर रहा है. और ये FD है. FR रजिस्ट कर रहा, FD है. ओके. एंड दिस इज द सेक्शन. अगर मैं यहाँ पे एक काट के एक्स एक्स सेक्शन बना दूं तो मेरा सेक्शन कुछ इस तरह बन जाएगा.
that is x section. So that it is length of that weight section and perimeter of the weighted section. That perimeter, length into perimeter, ये section मैंने बता देते हैं, तो section बन गया, तो section का perimeter जो भी है ये यहां से लेके यहां तक, that is in perimeter, that p. तो मेरा जो एरिया रहेगा that is nothing but length into perimeter, length into perimeter, that is nothing but क्या रहेगा, लेंथ इंटू पेरीमीटर क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, दैट सरफेस एरिया, वेटेड सरफेस एरिया. वो वेटेड सरफेस एरिया नहीं क्या रहेगा, शेयरिंग रेजिस्टिंग एंड फ्रिक्शनल एरिया, शेयरिंग रेजिस्टिंग एंड फ्रिक्शनल एरिया कहाँ का, ये कॉर्नर कॉर्नर का, ये वाला दिस एरिया. तो उसका लेंथ यानी टोटल पेरीमीटर इनटू द लेंथ, perimeter into the length, that is nothing but a shear resistance or frictional area. So guys, here is L get cancel, L पे डिपेंड नहीं है यानी. ओके सो बचा क्या फिर, बचा क्या, टाउ. सो वी वांट shear stress, नॉट स्ट्रेस. अगर मुझे चाहिए तो shear stress के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड बाय पी चले जाएगा, टाउ नॉट इज इक्वल टू, टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा इनटू a by p into s naught. What is a by p? What is a by p? R. Yes, hydraulic mean depth. That is nothing but a. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, gamma into r into s naught, that is tau. Gamma into r into s naught, that is nothing but tau, shear resistance. We can say guys that is average stress, tau average. We can say also tau average. Okay, दिख रहा है नीचे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, tau average. हाँ. Can I erase this? हाँ सर. ओके, समझ गया ना, ये प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें. वेट कैसे आएगा, वेट ग्रेविटी के लिए आएगा, ग्रेविटी सीधी आएंगी, एफ आर कैसे आएगा, पैरेलल टू द बेड आएगा, पैरेलल टू द बेड आएगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा था वो. ओके ये चीज दी हो, थीटा क्या रहेगा, ऑब्वियसली स्लोप रहेगा, नॉट रहेगा. ओके नेक्स्ट, shear stress distribution at the boundary of the channel. Okay. One minute.
tau max, that is nothing but a maximum, और आप ये बोल सकते हो, tau max नहीं बोलो, मत बोलो, 0.75 बोल सकते हो, tau max नहीं, 0.75 of gamma of y of s naught, that is 0.97 977 gamma y s naught. ओके, gamma y s naught, y आप इन टर्म्स ऑफ r को y के टर्म्स में लिख रहे हो. ओके, here is also same 0.75 gamma y s naught. ओके, b by y is greater than or equals to 5 तभी होगा. Note, shear stress at side is approximately equal to approximately equal to 75% of shear stress at bottom. Okay, यानी shear stress at side approximately equals to 75% of bottom. Okay, ये approximately यहाँ पे नहीं आ रहा है डायरेक्टली, लेकिन ये क्या है, कितना है 0.75, इसीलिए 75%. ओके, okay. So this is the part. This is the part guys. अब फिर से आते हैं बुकलेट. अभी समझ गया होगा बोलना सर, सर समझ गया अभी, है ना? That is got it. ये कैसे है? ओके, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यानी क्या होगा, y चेंज रहेगा. ओके, y चेंज रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GVF, gradually varied flow. Change in depth of flow are gradually. Change in depth flow are gradually varied flow. Then rapidly varied flow, hydraulic jump, maxed. Okay, लेकिन सबसे पहले gradually varied flow. The depth of varies gradually so that the curvature of stream are not excessive. First one thing again. The depth varies gradually so that the curvature of streamline is not excessive नहीं है. Frictional resistance play important role.
the pressure is assumed to be hydrostatic. Pressure is assumed to be hydrostatic. Next, example of gradually varied flow. The backwater curves produced by a obstruction to the flow and to flow such as wear is a typical example study. यानी आपने वियर लगा दिया तो वहां पे क्या होगा कि वो बैक वाटर फेंकेगा, तो दैट बैक वाटर इज नथिंग बट अ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो. तो स्टडी का एग्जांपल है. द dropping of water surface due to the sudden drop bed that is canal, that is study. देखो अब ये स्टडी क्या है. अगेन, द ड्रॉपिंग ऑफ water surface due to a sudden drop in bed canal. सडन ड्रॉप हो रहा बेड कैनल में, तो भी वो काय में आ रहा, वो स्टडी में आ रहा है. सडन ड्रॉप हो रहा तो भी वो काय में आ रहा है गाइस, स्टडी में आ रहा. ओके, स्टडी में आ रहा. द नेक्स्ट फ्लो, द पैसेज फ्लूइड वेव्स एंड स्टडी. पैसेज of fluid, that is fluid wave is unsteady. पैसेज की जो भी फ्लूइड वेव है वो क्या है, अनस्टडी है. आप बोलेंगे सर ये अनस्टडी ये कैसी क्या. ओके, नो इश्यूज, देखते हैं. रैपिडली वैरिड फ्लो, दैट इज हाइड्रोलिक जंप. रैपिडली वैरिड फ्लो, दैट इज नथिंग बट व्हाट, हाइड्रोलिक जंप. आप बोलेंगे सर हाइड्रोलिक जंप व्हाट इज स्टडी कैसे क्या होगा. गाइस क्या होता है, यहाँ पे आपका ये है, क्या है, डैम है. डैम में भी पानी काय में है, स्टडी में है. डैम में भी पानी टर्बुलेंस में वगैरह नहीं है. ओके, फ्लो में है क्या, नहीं है, स्टडी केस में है डैम में इधर पानी. ये आपका क्या है, ये आपका है क्या है गाइस, गेट है. दैट गेट नथिंग बट स्पिलवे. स्पिलवे से आपने पानी छोड़ दिया, यूनिफॉर्मली छोड़ दिया आपने पानी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सडन कोलैप्स होके वो क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक डेप्थ क्रिएट कर रहा. यहाँ पे एनर्जी फिर से रिगेन हो रही और यहाँ पे जा रही है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फ्लो. दैट इज द पार्ट ऑफ स्टडी फ्लो. आप अगर बोलेंगे हाइड्रोलिक जंप स्टडी में आता क्या, गाइस दोनों में आता, स्टडी और अनस्टडी. ओके, हाइड्रोलिक जंप इट इज ऑकर इन स्टडी और अनस्टडी. ओके, दोनों इसमें हाइड्रोलिक जंप वी कैन टेक, लेकिन स्टडी में भी आता और अनस्टडी में भी आता. सो देखते ये काय का देख रहे हैं, अभी हम स्टडी का देख रहे हैं. यहाँ पे नहीं था क्या, स्टडी का देख रहे हैं. ओके, स्टडी का देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट अभी हम स्पेशली वैरिड फ्लो. व्हाट इज स्पेशली वैरिड फ्लो, दैट इज स्पेशली वैरिड फ्लो, दैट सेक्शन. separation of irrigation water in a field flow over sites. यहाँ पे क्यों आ रहा, यहाँ पे आप सेपरेट कर रहे हैं पानी को, और फिर से ये क्या हो रहा कि यहाँ पे आपने बंद कर दिया तो क्या हो गया, पानी की लेवल बढ़ गई. या फिर यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया और यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आपने क्लोज करनी है, यहाँ पे पानी की लेवल बढ़ रही है. दैट इज नथिंग बट व्हाट, पार्शियली मत बोलना इसको. दैट इज नथिंग बट अ पार्शियली एसिड साइलेंट, सो वी कैन लाइक पार्शियली. दैट इज नथिंग बट अ पार्शियली भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पार्शियली वैरिड फ्लो. while defining gradually varied flow and rapid varied flow, यानी ग्रेजुअली वैरिड फ्लो और रैपिडली वैरिड फ्लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, स्पेशली वैरिड फ्लो. It is assume that no flow is taken out or added to canal volume of water in particular time
interval, volume of water particular time interval is converted into the in the canal system. If to any exist flow system, some of some flow is abstracted and added. It is called spatially varied flow. अब आप बोलेंगे सर ये तो नहीं समझा. स्पेशली वैरिड फ्लो में क्या हो रहा है गाइस? स्पेशली वैरिड फ्लो में आपका Q1 that is Q3 and that is Q2. अब यहाँ पे आपको Q5 वगैरह देखे हैं, बट हियर इज Q1, हियर इज Q3, हियर इज Q2. अब यहाँ पे Q5 Q देखे नहीं पता मुझे भी लेकिन Q1, Q2 एंड Q3 इस तरह के आपके 3 Q रहेगी. तो आपका क्या हो रहा है कि आपका ये Q से लेके यहाँ तक यानी Q2 अगर हम देख रहे हैं तो Q1 माइनस Q5 ये आपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा ये सेक्शन पे, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, इधर आपने डिस्चार्ज किसको दे दिया है, इधर आपने डिस्चार्ज दे दिया है आपके फील्ड को. तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्चार्ज इधर चले गया आपका और बाकी का डिस्चार्ज आपका इधर चलेगा. तो ये फील्ड को जो भी डिस्चार्ज दिया है आपने, तो दैट इज नथिंग बट ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे जो भी फ्लो ऑकर होगा, दैट फ्लो इज नथिंग बट स्पेशली वैरिड फ्लो. स्पार्शियली वैरिड फ्लो. ओके, स्पार्शियली वैरिड फ्लो कैन बी स्टडी और अनस्टडी, दोनों भी है. ये स्टडी भी रह सकता है और अनस्टडी भी रह सकता है. In the study partially varied flow, the discharge while being study discharge study varies among the length of channel. Okay, unsteady varied flow, it is the discharge not only the unsteady but also the varies along the length of channel में discharge भी vary मिलेगा आपको. Example, स्प्रेडिंग ऑफ इरिगेशन फील्ड, मैंने अभी बताया स्प्रेडिंग ऑफ इरिगेशन फील्ड यानी स्प्रेडिंग कर दिया आपने इरिगेशन फील्ड में, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है. प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फ्लोस, यूनिफॉर्म फ्लो, प्रिज्मेटिक चैनल, कांस्टेंट वेलोसिटी जो हम लैब में करते डिस्चार्ज लेने के लिए. ओके, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, बैक वाटर कर्व बिहाइंड द डैम, बंद कर दिया गाइस, गेट बंद कर दिया, पटकीशा यहाँ पे क्या हो जाता, बैक वाटरिंग आ जाता. तो ये बैक वाटरिंग क्या कर देता, यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज कर देता. दैट इज ग्रेजुअली वैरिड फ्लो. रैपिडली वैरिड फ्लो, दैट इज हाइड्रोलिक जंप. देयर इज हाइड्रोलिक जंप, यहाँ पे हाइड्रोलिक, दिस इज हाइड्रोलिक जंप. ओके, हाइड्रोलिक जंप. सो रैपिडली वैरिड फ्लो, हाइड्रोलिक जंप एट अ टो ऑफ स्पिलवे, दैट इज अ स्पिलवे, ये स्पिलवे है. ओके, और स्लूइस गेट. Then spatially varied flow, that is nothing but the flow over a side weir. Side weir से जो भी flow होगा, that weir is nothing but spatially varied flow. अब ये स्टडी के लिए हो गए. ओके, हाँ स्टडी है, स्टडी में इतने सारे आते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ दैट इज अनस्टडी नहीं है, स्टडी है गाइस. ओके, दैट इज इन स्टडी. सो नेक्स्ट अनस्टडी में कितने आ रहे हैं अभी? अनस्टडी में ये देखो, ये आ रहे हैं अनस्टडी में. अनस्टडी हैज अ यूनिफॉर्म फ्लो. यस, अनस्टडी हैज अ यूनिफॉर्म फ्लो. प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, बट ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए. ओके, अनस्टडी में यूनिफॉर्म फ्लो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए. अनस्टडी में प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है. ओके, देन ग्रेजुअली वैरिड अनस्टडी फ्लो, दैट्स व्हाई यू लिखा है. या फिर ग्रेजुअली वैरिड फ्लो स्टडी के लिए आपको एस लिखा है क्या? नहीं. रैपिडली वैरिड फ्लो लिखा है क्या? नहीं. तो दैट इज ये क्या के लिए? स्टडी के लिए है. ये क्या के लिए? स्टडी के लिए है. यू लिखा है यानी क्या है? अनस्टडी है. ग्रेजुअली वैरिड अनस्टडी फ्लो, रैपिडली वैरिड अनस्टडी फ्लो एंड स्पेशली वैरिड अनस्टडी फ्लो. तो
ग्रेजुअली वैरिड में क्या हो रहा? प्रैक्टिकल, इट इज नॉट, सॉरी, ग्रेजुअली वैरिड फ्लडेड वेव इन रिवर। ग्रेजुअली वैरिड में क्या हो रहा? फ्लडेड वेव आ रहे, देन यहां पे सर्जेस आ रहे। रैपिडली वैरिड में क्या आ रहे? सर्जेस इन अ कैनल, टाइडल बोर इन द रिवर। सर्जेस आ रहे कैनल में, टाइडल बोर आ रहे रिवर में, रैपिड। अब आपके सर्जेस क्या है वो मैं बताता, उसके ऊपर जाएंगे अपन। ओके, सर्जेस, सर्ज यानी क्या है? सरफेस रन, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ ड्यू टू रेनफॉल, दैट इज अनस्टडी। अनस्टडी रहता सरफेस रन ऑफ, जहां पे कम ज्यादा होते होते रहता ओवर लैंडफिल्ड। अब ये सब आपको पढ़ना है। आप बोलेंगे सर मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये सब अभी सामने का पढ़ना है। ओके, द फ्लो इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फ्लो विथ वेरीज वेलोसिटी in a prismatic channel is also varied flow. हाँ, वेरिड फ्लो। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में जनरली वेरिड फ्लो रहता। फ्लो विथ वेरीज वेलोसिटी इन अ प्रिज्मेटिक चैनल, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल एंड प्रिज्मेटिक चैनल। देखो, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, प्रिज्मेटिक चैनल, लेकिन यहाँ पे जनरली नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में वेरिड फ्लो तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें प्रिज्मेटिक चैनल नहीं होगा। ओके, इसलिए अगर प्रिज्मेटिक चैनल है लेकिन वैरिंग वेलोसिटीज है तो वेरिड फ्लो रहेगा। वैरी हो रहा है, नहीं वैरिड है, सीधी सीधी बात। ओके, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज रियर और प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अभी बताया मैंने यहां पे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो नॉट पॉसिबल। ओके, uniform term generally refers to steady uniform flow. Reason: unsteady uniform flow would require the that of water surface fluctuated from time to time, यानी कम ज्यादा, ऊपर नीचे, खबड़ खुबड़ जिसको हम बोलते, जो एक लेवल में नहीं है। ओके, टाइम टू टाइम, रिमेनिंग पैरेलल टू द चैनल ऑफ बिल्ड। varied flow varied flow can be either steady or unsteady। varied flow क्या रहेगा? either steady और unsteady रहेगा, दोनों में से कोई भी एक रह सकता। since unsteady flow is rare, unsteady flow is rare, that term unsteady flow is generally refers to represent unsteady varied flow exclusively। यानी क्या हो रहा कि आप क्या बोल सकते हैं, अनस्टडी फ्लो इज जनरली रेफर्स टू, यानी क्या हो रहा, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज रेयर, रेयर यानी नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, रेयर ही है। तो अनस्टडी जनरली क्या होगा, अनस्टडीली वैरिड फ्लो होगा। अनस्टडी फ्लो में क्या आएगा? वैरिड ही आएगा। तो अनस्टडीली वैरिड, इसीलिए यहाँ पे देखो ग्रेजुअली वैरिड, रैपिडली वैरिड एंड स्पेशली वैरिड, स्पेशली वैरिड। ओके, स्पेशली वैरिड, स्पेशली वैरिड। तो ये तीन फ्लो जनरली अपन लेंगे इसमें, और इसमें ग्रेजुअली वैरिड, रैपिडली वैरिड एंड स्पेशली वैरिड एंड यूनिफॉर्म स्टडी में तीनों आ रहा है। तो गाइस दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, unsteady and steady flows. Okay, now we go to the surges. Oh, what is surges now? Okay, what is surges? आप देखो, आपको बुकलेट भी पढ़ना है और आपको मैं जो लिख के दे रहा वो भी पढ़ना है। बुकलेट छोड़ देना है और सिर्फ मैं जो लिख के दे रहा वो पढ़ना है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। फालतू जो बुकलेट में है वो फालतू मैं क्यों लिख के दूं आपको? नहीं लिख के दूंगा। जो नहीं समझने वाला है वो मैं लिख के दूंगा। सो आप बुकलेट से भी जाओगे और आप मैं जो लिख के दे रहा उससे भी जाओगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट इट इज सर्च।
1 minute. What is surge? A surge is a moving hydraulic jump. Hydraulic jump. Okay, moving hydraulic jump. Oh. By the operational by the operation of gates across a canal. Across a canal or river. Canal or river. So we know that. पानी भी किस तरह आएगा? पानी इस तरह आएगा, इस तरह जंप करेगा, इस तरह जाएगा. It's occur like that. Like that. Standing wave front, standing jump. Standing wave front standing jump. That is nothing but a hydraulic jump. Okay, hydraulic jump. Oh, what is hydraulic jump? This is hydraulic jump. Bounce back. Bounce back. Which bounce back? That flow bounce back. Depth is bounce back. यहाँ पे depth हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा, पानी bounce back हो रहा, यहाँ पे critical velocity, critically velocity, यहाँ पे uniform velocity पे जा रहा. Critical velocity meet the uniform velocity and a hydraulic jump. Okay. Next to देखो, the hydraulic jump what we seen at hydraulic jump. यहाँ पे ये अपस्ट्रीम साइड है, ये कौन सी साइड है? डाउनस्ट्रीम साइड है. डाउनस्ट्रीम ही देखने जाते हैं आप, ऐसे देखते हैं डाउनस्ट्रीम. हाँ, कितना बड़ा है. क्या देखते कितना बड़ा है? डैम का स्पिलवे देखने जाते हैं हम. बोलते डैम, पूरा डैम दिख गया है. गाइस आप सिर्फ स्पिलवे देखते हैं, जो सामने का फ्रंट रहता है वो क्या रहता है? स्पिलवे. डैम वो तो बहुत बड़ा रहता. डैम के साइड बैंक्स जो रहते हैं वो अगर आपने देख लिया तो आपको एक दिन लग जाता. ओके, सो सिर्फ आप क्या देख के आते? स्पिलवे देख के आते. कम से कम सिविल इंजीनियर तो भी बोलने को ना कि मैं डैम के लिए विजिट नहीं गया था, मैं स्पिलवे देखने के लिए गया था.
ओके, स्पिलवे गेट्स देखने के लिए गया था। ओके, सो इन द स्पिलवे गेट, फ्रंट ऑफ द स्पिलवे गेट आप खड़े हो, तो दैट इज नथिंग बट अ डाउनस्ट्रीम साइड, क्योंकि उसके पीछे साइड क्या है, पूरा पानी। ओके, तो जब वहां पे क्या होगा कि वहां पे गेट ओपन हो जाएंगे, तो ओपन हो जाने के बाद आपको हमेशा यहाँ पे एक इस तरह का सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहेगा डाउनस्ट्रीम साइड में। टेल लेवल का एक टेल वाटर आपको दिखेगा, दैट इज टेल वाटर। ओके, जब आपका यहाँ पे पानी हरदम रहेगा, गेट बंद भी रहेगा तो भी पानी रहेगा वहां पे, तो वो क्या रहता है कि जो भी हाइड्रोलिक जंप यहाँ पे होता, तो ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप यहाँ का कंक्रीटिंग, यहाँ का ये यानी क्या नीचे का आपका इरोजन ना हो जाए सॉइल, इसलिए यहाँ पे कंक्रीटिंग करते हैं। और यहाँ पे एक सस्टेनेबल वाटर पहले से ही रखते हैं कि जो भी हाइड्रोलिक जंप आए वो डायरेक्टली हैमरिंग ना करे सरफेस को, वो ऊपर ही हैमरिंग करे वाटर टू वाटर एंड मूव हो जाए। और यहाँ पे एक आपका इसीलिए आपका एक टेल वाटर सरफेस वहां पे बनाया जाता है, एक वियर बनाया जाता है फिर से, तो उसके ऊपर से फिर वो चले जाता, फिर उसकी हाइट बढ़ते 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 जाती। ओके, इस तरह रहता हाइड्रोलिक जंप। आपने देखा नहीं देखा? आपने देखा नहीं देखा? वाटरफॉल का एग्जांपल दे सकते हैं? नो, वाटरफॉल इज द नॉट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक जंप। वाटरफॉल कैसे होगा? वाटरफॉल में सिर्फ और सिर्फ फॉल हो रहा, फॉल होने के बाद वहां पे जो है एक यूनिफॉर्म डेप्थ दिखती है आपको, वो यूनिफॉर्म डेप्थ से वो फ्लो हो रहा। ओके, वाटरफॉल नहीं होगा। ये इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा, तभी आप क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक जंप बोलेंगे। ओके, लिखो द हाइड्रोलिक जंप what we seen at the hydraulic jump, what we seen at the downstream of spillway, downstream of a spillway, or at a sluice gate, or at a sluice gate, or at a sluice gate is stationary at a given location, is stationary at a given location, stationary at a given location. Hence it is also called standing wave front, standing wave front. It is also called standing wave front. Standing wave front. How the standing wave front? The gate will open upward and the water is like this. क्या हो रहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बैक वाटर आ रहा, velocity of wave, water upstream side and water डाउनस्ट्रीम साइड, क्योंकि वाटर कहां से, यहां से पास हो जाएगा, यहां से इसे पास हो जाएगा वाटर, दैट इज इन डाउनस्ट्रीम साइड। जब आप गेट ओपन करोगे तब यहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी वाटर की, इधर डेप्थ कम हो जाएगी। ये आपको लैब में एक्चुअली करने को होना था FM2 में, ये प्रैक्टिकल है सर्जेस का, दैट इज अ सर्ज। ये गेट ओपन कर दिया, अपस्ट्रीम का पानी जो है वो डाउनस्ट्रीम में जब आएगा तब क्या होगा कि यहाँ से पानी फ्लो होता, वाटर फ्लो हो कि यहाँ पे एक ये बन जाता है, एक हाइट बन जाती, तो दैट हाइट, दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव सर्च, that is nothing but a positive surge, that is nothing but a here
negative surge. Negative surge. Water level falling, that in water level less water, यहाँ पे आप बोल सकते हैं less water, that's why उसको क्या बोल सकते हैं, negative surge. अब पॉजिटिव सर्च भी रहता है, तो ये दैट इज पॉजिटिव. More water rises, positive surge. More water rises, positive surge. Okay. Next. नेक्स्ट केस. अब यहां पे ही क्या हो रहा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैंने देखा और ये मिडल में है, हाँ ये सेक्शन कहाँ पे है, ये मिडल सेक्शन है, मिडल में आपने ओपन कर दिया. ओके, तो आपको ये इस तरह का दिख रहा, मे भी इस तरह का ना देखते हुए आपको उल्टा भी दिख सकता. उल्टा कब दिख सकता है आपको, उल्टा कैसे दिख सकता है, यानी लाइक आपने ओपन कर दिया, ये भी मिडल में है, इट्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी. ओके, दैट वेव, velocity of wave. Just like this, just like this. So that is negative surge. And that is positive surge. Negative surge and positive surge. Less water, negative. More water, positive. More water, positive. Okay, that is surges. 1 minute. I'll show you the real example of surges because of this is important. सर ये दूसरी वाली कंडीशन कब होती है?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। वीडियो देख रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ देख। स्लो मोशन में देखा आपने तो आपको पता चलेगा कि स्लो मोशन में देखा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आपको पता चलता कि अभी क्या था, ऊपर था, ऐसे कर दिया तो पानी कहाँ पे हो रहा, मोर आपका कहाँ पे, जब आपने गेट वो कर लिया तब सेकंड वाली कंडीशन जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया है वो कंडीशन हो रही है। ओके। यहाँ पे ये हाइड्रोलिक जम के लिए है। ओके। आपके कॉलेज में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके। देखो क्या हो रहा है वहां पे सडन ये हो रहा, वहां पे एक पॉजिटिव सर्ज आ रही, दैट इज टाइडल टाइप, दैट इज नथिंग बट अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके देखो, टोटली राइज इन डेप्थ। अब देखो, अब ओपन कर रहा तो क्या हो रहा, हाइड्रोलिक जंप देखो, हाइड्रोलिक जंप देखो, हाइड्रोलिक जंप देखो, सी ये हाइड्रोलिक जंप, दैट इज हाइड्रोलिक जंप। स्लोली, दैट इज इन स्लो मोशन, hydraulic jump can occur like this. Why this hydraulic jump is occur? Because of here is VO. Okay. देखो अभी उन्होंने क्या कर दिया, अपस्ट्रीम का गेट खोल दिया, गेट खोलने के बाद क्या हो रहा देखो अभी, स्लोली ओके, वहां पे देखो, वहां पे टर्बुलेंस टर्बुलेंस आ गया, टर्बुलेंस आने के बाद धीरे धीरे जो है डेप्थ इट इज इंक्रीज एंड पॉजिटिव सर्ज अवे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ फ्लो, अवे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ फ्लो होना चालू हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्लो का नेचर पता रहने को ना, कि किस तरह का गेट का यानी फ्लो आ रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अगर आपने रियल एग्जांपल देखा तो आपको फ्लूइड बहुत जल्दी समझता। पॉजिटिव सर्ज है, ऑब्जर्व स्लो मोशन, पॉजिटिव सर्ज देखो, पॉजिटिव सर्ज देखो, इस तरह का अभी पॉजिटिव सर्ज हो रहा है, कहाँ पे, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम गेटिंग पॉजिटिव सर्ज। ओके, पॉजिटिव सर्ज दिया है अपस्ट्रीम में।
ओके, तो अभी पॉजिटिव सर्च कहाँ पे चलेगा, बाहर चलेगा। हाइड्रोलिक जंप देखते हैं अभी, हाइड्रोलिक जंप कैसे तैयार हुई। वेयर इज नेगेटिव सर्च, अंडर अपस्ट्रीम साइड। देखो अपस्ट्रीम साइड में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस इज द हाइड्रोलिक जंप, इज hydraulic jump, hydraulic jump, hydraulic jump. Okay, then it's convert to the regular flow. That is negative. That is, here is the negative surge. More water, that is positive. Less water, that is negative. क्या मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूं, आप देख लो। हाँ सर। ठीक है, आपको ये तो समझ गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव सर्च क्या है, हाइड्रोलिक जंप क्या है, ये तो समझ गया होगा अभी। इस पे कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। ओके, नाइस। वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके इस पे। ग्रुप पे शेयर कर दिया मैंने। अभी हम देखते हैं इसके बाद का टॉपिक। 9 o'clock इज 9 o'clock हो गए। इसके बाद का टॉपिक हम स्पेसिफिक एनर्जी का टॉपिक है, तो वो कंटिन्यू टॉपिक लेना पड़ता, तो हम कल की क्लास में देखते हैं। ओके, 1 मिनट।